Hello everyone. Now in this part of the video we are going to discuss the properties of first group elements, that is alkali metals. First of all, the elements which belong to this group is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They all are called alkali metals because they have the capability to form alkalis. Starting with their general properties. First of all, their electronic configuration. The electronic configuration of group 1 elements is noble gas NS1. Taking an example of sodium here, if we write the electronic distribution of sodium whose atomic number is 11, the electronic distribution is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now 1s2, 2s2, 2p6 is the electronic configuration of neon, which is a noble gas. 6 plus 2, 8, 8 plus 2, 10 electrons are there in neon. So we write the configuration Ne3s1. Ne means this configuration will be the same like that of neon. And the last configuration is NS1. Similarly for lithium, whose atomic number is 3, 1s2, 2s1 is the electronic distribution. 1s2 is the electronic distribution for helium. So we write it as He2s1. So generally we write the electronic configuration for this group element as noble gas into NS1, where N is the principal shell in which the electrons enter. Like in lithium it is 2, in sodium it is 3, in potassium it will be 4. And this one is showing that they are belonging to the first group, as we have done the characteristic that in S block element, the elements in the S subshell will tell us the group number. So they are having one electron in the S subshell, means they all are in the first group. Coming to the atomic and ionic radii. As these group members, they are the first group in the periodic table. अब क्योंकि पहला ही ग्रुप है तो इसका साइज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बाकी के ग्रुप मेंबर से बड़ा होगा. ग्रुप 1 एलिमेंट्स है लार्जेस्ट आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि जैसे जैसे हम इस लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धीरे धीरे जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा. विदिन द पीरियड द साइज डिक्रीजेस. जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे the size decreases. The reason being that at each step the effective nuclear charge increases. The reason is Z effective, that is effective nuclear charge increases and shell remains constant. Shell is constant when we move from left to right in a period. Down the group the atomic and ionic radii increases because vice versa of these two. Down the group effective nuclear charge decreases and shell increases at each step. Lithium में दो shells हैं. Suppose this is the nucleus, this is the first shell, this is the second shell. Sodium में एक shell और increase हो गई. Potassium में एक shell और increase हो गई. So effect of the nuclear charge to the last shell is less. So effective nuclear charge decreases and shell is increasing at each step. Hence atomic and ionic radii down the group increases and within the period decreases. कमिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी. अब क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम मिलता है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन जल्दी ही बाहर निकल जाता है. सो दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम होगी. और जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे, क्योंकि साइज डिक्रीज होगा, जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज होगा वैलेंस शेल न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगी. न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वैलेंस शेल पर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. डाउन द ग्रुप, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा. न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वैलेंस शेल पर कम होगा, अट्रैक्शन कम होगी, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. So within the period the ionization energy increases and down the group ionization energy decreases if we talk about the first element, first electron which is present in the valence shell. So in that respect we say that the first ionization energy down the group decreases and within the period increases.
बट व्हाट अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अब उसकी कन्फिग्रेशन जो आयन बन गया, एटम से आयन बन गया, उसकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी स्टेबल हो गई. दैट इज व्हाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इफ वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हियर, सोडियम को अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब बाहर छोड़ना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, आफ्टर दैट द कन्फिग्रेशन इज दिस वन विच इज द स्टेबल कन्फिग्रेशन. अब अगर इसमें से भी हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्टेबल कन्फिग्रेशन में से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है. So second ionization energy in this case is very high, because in each case after the removal of first electron, all the atoms when they get converted to unipositive ion, they acquire the noble gas stable configuration, and from that configuration if we have to remove another electron, large amount of energy is to be supplied. Coming to the physical properties of first group elements. First is the melting and boiling point. They have low melting and boiling point बिकॉज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पर एटम. हर एटम में बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है. अब क्योंकि बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है, इसलिए जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो बॉन्ड टूट जाता है. दैट इज व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज लो एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा एटम का साइज बड़ा होता जाएगा. एटम का साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी. जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी उतनी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें दूर करने के लिए. जितना उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितनी बॉन्डेज ज्यादा होगी, उतना हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसे तोड़ने के लिए. Next is density. They have low density and their density increases down the group. Now this density depend on size of atom and type of packaging. अगर एटम का साइज छोटा है और वो टाइटली पैक्ड है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा. लेकिन अगर एटम का साइज बड़ा है एंड दे आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस. If this is the case, then the density of those elements will be less. Next is the metallic character. In terms of electrons, how do we define the metallic character? Tendency to lose the electron. अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तब हम उन्हें मेटल्स कहते हैं. तो अब क्योंकि इनकी बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है and they have the tendency to lose that electron so that they can acquire the stable nearest noble gas configuration. Hence they have high metallic character. And down the group, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे down the group, साइज इंक्रीज होता जाता है. साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल में अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है. So if the tendency to lose the electron increases, means metallic character increases down the group. So metallic character here it is strongly metallic with low ionization energy. थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. And down the group the ionization energy decreases क्योंकि साइज बड़ा हो गया and hence the metallic character increases. Next physical property is oxidation state. Its oxidation state, the oxidation state of this group members is +1 because they all have one electron in their outermost shell. So they have the tendency to lose that one electron to form ionic compounds. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयन में. And hence now that ion will form ionic bond with another ion. Next is characteristic flame color. Characteristic flame color means that the elements of this group, they impart characteristic particular color to the flame. जैसे अगर हम किसी एलिमेंट को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करें तो वो एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा. वो क्यों शो करेगा? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द एटम, द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन देयर ग्राउंड स्टेट. व्हेन वी प्रोवाइड देम द एनर्जी, जब हमने उन्हें फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इस वेलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई. एनर्जी मिलने से वो किसी भी हायर लेवल में चला गया. यहां से यहां वो कैसे गया?
बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, यहाँ इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ये किसी भी हायर एनर्जी लेवल में चला गया। अब क्योंकि इसके पास अब ज्यादा एनर्जी है, इसलिए हमने कहा कि नाउ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स excited state. So we have written here that initially the electron was in the ground state, but after absorbing energy now it is in the excited state. In the excited state it will not be stable and each and everything tries to become stabilized. अब वो stabilize कैसे होगा? जब वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी और वो दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। सो आफ्टर रिलीजिंग दैट एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, जब वो रिलीज करेगा, दैट एनर्जी विल फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड हेंस द कलर इज visible to us and they impart color to the flame. With that particular flame color हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एलिमेंट क्या होगा। जैसे हम इसको रिलेट करें कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में पीएच पेपर की स्ट्रिप डालते हैं तो हम उसके कलर को स्टैंडर्ड पीएच चार्ट के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसका पीएच कितना है और इसका ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इन द सेम वे विद दिस characteristic, with this particular flame color, we can identify that which element this can be if we are not aware of it. अगर हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट क्या है तो अगर हम उसे फ्लेम में इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे, एक्साइटेड से दोबारा स्टेबल होने के लिए वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे बाय रिलीजिंग द एनर्जी एंड दैट रिलीज एनर्जी विल फॉल इन द region of visible spectrum and the color is imparted to the flame. With that particular color we can come to know that which element is available to us or which element is given to us. Next physical property is photoelectric effect. This again we have discussed in chapter 2. Photoelectric effect is the ejection of electron when radiations of particular frequency fall on the metal surface. Suppose this is a metal sheet and some particular frequency radiations they fall on it. With the help of those frequency radiations, the electrons they will leave their path and they get ejected out and start moving in the circuit. So that is the photoelectric effect. These elements they show the photoelectric effect because they have one electron in their outermost shell and it is easy to remove that electron by providing the energy. Moreover, as we go down the group, the size increases. If the size increases, the ionization energy value decreases. Ionization energy क्या थी? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, तो थोड़ी सी ही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा एंड इट कैन मूव इन द सर्किट. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय दिस ग्रुप मेंबर्स. और इन ग्रुप मेंबर्स में भी अगर हम कंपेयर करें तो सीजियम जो बॉटम पे आता है, सीजियम शो द मैक्सिमम of this photoelectric effect. The reason being because it have lowest ionization energy. So this is all about the physical properties of group 1 elements. Next we will discuss the chemical properties of alkali metals. Thank you.